एटा ट्रू स्टोरी माने जनकर एभला जने हॉन्टेड थिले आ से समय जेतोळु से कोन से जेतोळु एभली माने ए द्वंद्व रे पडिथिले संग संग कोन हला वास्तव रे कृष्ण ही तो बचाइले से जो सेमती चाहिता तो हुए तो बंची न पाता किंतु कृष्ण तांको पई सहाय कृष्ण से पहुंचले ठीक टाइम रे बोली से आज ब्लैक मैजिक को बची गले ना सी मध्ये यार पार्टी की तो एटा हला बेनिफिट माने जदि हमर किछि प्रीवियस लाइफ रो मध्ये हम रखिछे सेइठो हमर स्टार्ट हे जो तो एबे स्टार्ट करबा हमर लीलामृत हमें पढ़थिले पेज नंबर 65 जाए तो प्रभुपाद को इनिशिएशन सेरेमनी चलती इनिशिएशन सेरेमनी चलची आ सेठी तापरे केमती मान दीक्षा नेबे सब 11 जन को दीक्षा हला हम सेटा पढ़िथिले पेज नंबर केते थिला 65 हां दीक्षाटा पढ़िथिले ओके तापरे क्लासेस मध्ये होतला आउ एमन सब केमती इंस्पायर्ड थिले प्रभुपाद पाखरे देखिछि टोटल काको बचले एलेन गोटे हार्मोनियम गिफ्ट करथला आसी प्रभुपाद नहीं सेटा हमें सुनिथिले तापरे तापर प्रभुपाद सेटा बजौथिले आ समस्त तार मजा मते नउथिले Swamiji lived amid the drug culture in a neighborhood where the young people were almost desperately attempting to alter their consciousness. सेठे समान सब माने ड्रग भीतर बुड़ी रहउथले समान ताको कॉन्शियसनेस को सबोल बुड़ी के रखुथले whatever was available they would just take drugs. Swamiji assured them that they could easily achieve the higher consciousness they desired by chanting Hare Krishna. It was inevitable that in explaining Krishna consciousness, he would make allusions to the drug experience, even if only to show that the two were contrary paths. He was familiar already with Indian sadhus who took ganja and hashish on the plea of aiding their meditation. And even before he had left India, hippie tourists had become a familiar sight on the streets of Delhi. सेतोल समस्त माने हिप्पी कल्चर एभले हे इतला जे इंडिया रे मध्य इंडियन साधु माने एभले गांजा हैसिस नथि इंडियन सोकल साधु से डबल कोट भीतर रखछन जे माने साधु कुहा जाय कि साधु बळी जहां आचरण तापरे हिप्पी टूरिस्ट माने मध्य एभली सब जिंस देखि सारि थिले दिल्ली रे द हिप्पीज लाइक इंडिया बिकॉज़ द कल्चरल मिस्टिक and easy access to drugs. They would meet their Indian counterparts who assured them that taking hashish was spiritual.
and then they would return to America and perpetrate their misconceptions of Indian spiritual culture. तो ये माने इंडिया रे कोन माने बहुत इजीली कम दाम रे तक ड्रग्स मिल जाए, इंटॉक्सिकेंट्स ये सब मिल जाए जल्दी इजी कम पैसा रे खर्च रे, तो माने बहुत एपटे आसी मध्य टाइम बितेथिले। तो केते लोक मते कहितले जे इंडिया रे जे गुडा हला स्पिरिचुअल फैसिस्ट स्पिरिचुअल काहे कि ना माने कहउछन जे गांजा हेसे सेउडा सब शिवं को पाके भूख लागे बोली कहै केते प्रकार लोक सब ए भली मन गड़ाना कहानी सब कहानी बनेगी कहउछले ना। And it was the way of life. The local head shops carried a full line of paraphernalia: marijuana, LSD, peyote, cocaine, and hard drugs like heroin, barbiturates were easily purchased on the streets and in the parks. Underground newspapers reported important news on the drug scene, featured a cartoon character named Captain High, and ran crossword puzzles that only a seasoned head could answer. Swamiji had to teach that Krishna consciousness was beyond the reversed LSD trip. Do you think taking LSD can produce ecstasy and higher consciousness? He once asked a storefront audience. तो थरे प्रभात पचारछंती जे LSD जो ड्रग नेले तम को भाबुछ तमे एक्सटेसी माने अष्टसात्विक विकार आसीबो तमरो तमे उच्चा चेतना को पळेबो। Then just imagine a room full of LSD. Krishna consciousness is like that. Prabhupada example दउछन माने जो भलिया पब्लिक ताको सेई भलिया एग्जांपल देल सर बुझ पारे। Krishna consciousness is full of joy. तो जॉय कहले बुझबेनी कि फुल ऑफ एलएसडी कहले जो टाइम से जॉय भाबुछन एलएसडी तार गोटे बिंदु से माने पाइकी कहउछन फुल ऑफ रूम with LSD तो केते एन्जॉयमेंट हो सेटा प्रोग्रेस। So people would come regularly and ask Swamiji disciples, "Do you get high from this?" And the devotees would answer, "Oh yes, you can get high just by chanting. Why don't you try it?" प्रभात कहते हाँ जदि तुम जप करिवो ताल तुम ए चेतना को उन्नीत हे पारे। Probably the most famous experiments with LSD in those days were by Timothy Leary and Richard Alpert, Harvard psychology instructors who studied the effects of the drug, published their findings in professional journals, and advocated the use of LSD for self-realization and fulfillment. तो ए दी जण थिले हमरो एक्सपेरिमेंट करथले जो माने हार्वर्ड रो साइकोलॉजी इंस्ट्रक्टर माने टिमोथी लेरी और रिचर्ड एल्बर्ट त माने कोन करथले ना एलएसडी को केमती माने भगवत उपलब्धि आत्म उपलब्धि पाई यूज करियो सेवडा यूज करथले किंतु से माने जेतोल हार्वर्ड रो बाहरी गले आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टिमोथी लेरी वेंट to become a national priest of LSD and for some time ran an LSD commune in Hillbrook, New York. तो जेतोल तक बाहर कर देले से ये रो माने ओटा ड्रग ता से कोच एटा आत्म उपलब्धि पय फायदा तो एमती कहि कि जेतोल से टिमोथी यूज करथिला तो सेतोल कोन कहले से सेतोल ताको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रो बाहर करथि तापर से कोन करथिला तापर से एबळी LSD समस्त बिकुथिला नेशनल प्रीस्ट माने जेटा बहुत भलो मंगलमय जिंस समस्त एटा यूज कर एभली प्रचार करला तो ताको तापरे माने एभली फेमस हेसला से ओटे स्मगलर बडे when the members of Millbrook commune heard about Swami on the lower east side तो सेही माने जहा को से LSD दउथिला से माने जेतोर सुनिले Swami आछंती lower east side who led his followers in a chant that got you high they began visiting the storefront प्रोपेगेंडा पोस्टर रे लिखले जे स्टे हाई फॉरएवर जे आज तुम एलएसडी नहीं कि हाई हो छ तो ए जो हमर चैट ए जो हरे कृष्ण चैट रे तुम सब बेला पई हाई रही तो ए भली प्रभुपाद कहले। One night a group of 10 hippies from Millbrook came to Swamiji's kirtan. They all chanted, not so much in worship of Krishna as to see what kind of
high chanting could produce. तो थरे से समस्ते आसिले 10 जन पूरा सही मिलब्रुक रो जो हिप्पी कम्युनिटी रो स्वामी जी को कीर्तन अटेंड करियो कृष्ण को माने पूजा शिक्षा में नो कि भगवान को भक्ति रे नो आछंदी केमिति एलएसटी रे हाई रहइबा देखा एलएसटी टू एटा केमिति हाई जपटा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन टा केमिति हाई चेक करे वास आफ्टर द लेक्चर a Millbrook leader asked about drugs. Prabhupada replied that drugs were not necessary for spiritual life, that they could not produce spiritual consciousness. प्रभुपाद कहउछन जे ड्रग्स पुडा बिल्कुल जरूरी है कारण एटा आध्यात्मिक जीवन पय दरकार नै and that all drugs induced religious visions were simply hallucination. To realize God was not so easy or cheap that one could do it by just taking a pill or smoking. भगवान को बुझिबा बा उपलब्धि करबा एत सहज न जे केवल गोटे बटिया खाइ दियो कि गोटे इंजेक्शन कि स्मोक कर दे हेजो ना chanting Hare Krishna, he explained, was a purifying process to uncover one's pure consciousness. Taking drugs would increase the covering and bar one from self-realization. तो प्रभुपाद को जन ड्रग्स टा वास्तव रे हम गोटे इमेजिनरी वर्ल्ड को नै जाय आ से इमेजिनरी वर्ल्ड रे हम भाबु जे आमे बहुत खुशी रे छ हमर किछि टेंशन नै वास्तव रे से हम टेंशन टा भूले दिछ खाली किंतु से जिंसडा तो अछि ना जे जोडा एग्जांपल प्रभुपाद दियंती ऑस्ट्रिच रो ऑस्ट्रिच जानछन ना ओट्ट पक्षी कौन करे ना से जो ओट्ट पक्षी जेतोड़ ताको बाघ गोड़ाए खाइबा पई से दौड़ी दौड़ी हालिया आइ जबो जेतोड़ से कोन करियो ना देखियो देखा जिवो ना बाघटा दौड़ुची से कोन करियो ना माटी तळे माटीटा टी खोली दबो खोली के मुंडटा ता भीतर पोती दबो तो मुंडटा पोती देले कोन ताको बाघ खाइबेनी सेई बेले एलिटिटा ए बेले ओटा हालुसिनेटर पक्कउची जे ना यू आर नाउ हाई किंतु एटा वास्तव रे हम चेतना को आउरी डिग्रेड कर दोछ हम नर्वस सिस्टम को वीक कर दोछ तो प्रभुपाद सेठ कहउछन बट हैव यू एवर टेकन एलएसडी द क्वेश्चन नाउ बिकेम ए चैलेंज तो से माने प्रभुपाद को बजाउछन तमे तो चैंटिंग करछो को जे एलएसडी तो अधिक फायदा दो तो तमे केबे एलएसडी नैचो की प्रभुपाद को कहउछन नो स्वामी जी रिप्लाइड I have never taken any of these things, not even cigarettes or tea. मैं मुंह के वे ओड़ा नहीं सिगरेट खाने की चाह मत खाए if you have not taken it then how can you say it is what is it प्रोफेसर कहउछन जे जदी आपण एलएसडी नहीं ना आती आपण ड्रग्स नहीं ना आती आपण केन कोइ परिवे एटार कोन अछि मिलब्रुकर्स looked around smiling. 2 or 3 even burst out with laughter and they snapped their fingers and माने हंसी की आगुटे फुटौछन thinking that Swamiji had been checkmated. भावजन देव स्वामी जी भाई आंसर नहीं तो प्रभुपाद कौन कहउछन रिप्लाई I have not taken Swamiji replied regally from his dais but my disciples have taken all these things marijuana LSD many times. I did advertise and they have given them all up सेमान सब एटा त्याग कर दिए you can hear from them तमे ना पचारो सेमाने आगु नउतले जो Hygriv you can speak and Hygriv sat up a little and spoke out in this Stenorian best in his Stenorian best the Hygriv प्रभु प्रभुपाद one of the first disciples the सीए कहउछन देबे जे मु एलएसटी नै छी आ एलएसटी टू केमती हरे कृष्ण कीर्तन टा आरी हायर. Well, no matter how high you go on LSD, you eventually reach a peak and then you have to come back down. Just like traveling into outer space in a rocket ship. He gave one of the Swamiji's familiar examples. Your spacecraft can travel very far away from the Earth for thousands of miles, day after day, but it cannot simply go on traveling and traveling. So, the example douchandi. Wait a second. एटा जणे पडले Well, no matter how high you go on LSD,
screen पड़ेला. You eventually reach a peak and then you have to come back down, just like traveling into outer space in a rocket ship. He gave one of Swamiji's familiar examples. Your spacecraft can travel very far away from the Earth for thousands of miles, day after day, but it cannot simply go on traveling and traveling. Eventually, it must land. On LSD, we experience going up, but we always have to come down again. That's not spiritual conclusion. Consciousness. When you actually attain spiritual or Krishna consciousness, you stay high because you go to Krishna. You do not have to come down. You can stay high forever. प्रभात के बड़े बुझेले जे जेमती गोटे स्पेस क्राफ्ट ऊपर को जाउची एरोप्लेन ऊपर को जाउची तो सब समय रे उड़ी परिबो पुणी तळु आसे पड़ियो तो एलएसडी रो एक्सपीरियंस ता ऊपर को जाय कि उड़ीबा आ पुणी तेल सरियोला आसी तळे बसे किंतु जेतोल तमे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रे कृष्णा कॉन्शियसनेस रे पळे आछो यू स्टे हाई फॉरएवर तो एटा सुने कि स्वामी जी वाज सिटिंग in his back room with Hagriv and Umapati and other disciples. The evening meeting had just ended and the visitors from Millbrook had gone. So पळेले तो 10 जण आस्थिले it is माने Hagriv और Umapati प्रभात सर कथा हेले Krishna consciousness is so nice. Umapati spoke up. You just got higher and get higher and higher and you don't come down. सेटा नै हम शास्त्र रे कोन लैंग्वेज आनंदम बुद्धि वर्धनम आनंद अनुभूतिटा बढ़ी बढ़ी जाउची जो आनंदर वेव टा हमर आउरी अधिक 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 ऊंचा हे केबे हमें सही चैंटिंग करछे सही मंगल आरती करछे सही रीडिंग करछे सही हियरिंग करछे हम केबे कोने जे वी गॉट बोर्ड अप नहीं इट गोस ऑन एंड ऑन Swamiji smiled. Yes, that's right. No more coming down, Umapati said, laughing, and the others also began to laugh. Some clapped their hands, repeating, no more coming down. The conversation inspired Hagriv and Umapati to produce a new handbill. तापरे ये वाला समय नोटे तैयारी करले pamphlet. लिखी कि stay high forever, no more coming down. Practice Krishna consciousness, expand your consciousnness by practicing the transcendental sound vibration. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो ये वाला समय ने करले. उमापति प्रभु को आपण जदि देखिबे उमापति प्रभु बेले बेले आसନ୍ତି मायापुर तो मायापुर आपण सबको दर्शन करबे से उमापति महाराज हेबे उमापति स्वामी ताको ए जो टॉपकिन स्क्वायर पार्क रे मते देखा जिवो से धरि की कीर्तन करछन पंचतत्वर फोटो. The leaflet went on to extol Krishna consciousness over any other high. এটা बहुत सुंदर हला ए पैम्फलेट द्वारा प्रचार. It included phrases like end all breakdowns and turn on, and it spoke against employing artificially induced methods of self-realization and expanded consciousness. तो ये बड़ा artificial methods को on करके वेइटा ऊपरे लोग ध्यान दो लगी. Someone objected to flyers playing too much of the hippie mentality, but Swamiji said it was all right. देखाउतला एटा जे माने किछ ओटे ऑपोजिट कोन होछि तो प्रभुपाद कहले ना सब राइट. तो ए बळे भाबरे नेक्स्ट तापरे टॉपकिन स्क्वायर पार्क के केमति कीर्तन हबो आउ केमति लोकमान को प्रभुपाद अट्रैक्ट करिवे. टॉपकिन स्क्वायर पार्क इज द ओनली पार्क जो माने हैज ए ट्री जो गछ तळे बसी प्रभुपाद कीर्तन करथि. तो सेही जगहटा मध्ये हमें देखिबा एठी ता ऊपर पड़िबा. हम जदि अमेरिका रे तीर्थ थाई पारे न थाई पारे किंतु एटलीस्ट ए टॉपकिन स्क्वायर पार्क टा प्रथम तीर्थ हम पे नहीं कारण कीर्तन प्रभु से स्टार्ट करछन तो से बोल भावे. तो तला जी थाओ हम कंटिन्यू करबा नेक्स्ट टाइम. हरे कृष्णा. जय जगत कुशल प्रभुपाद की जय और मुक्तविदा की जय. हरे कृष्णा. नवीना माताजी, माधवी माताजी, नीलिमा माताजी, गायिका माताजी, ममता माताजी, जगन्नाथ प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. दिलीप प्रभु, जैन माता, जैन प्रभु, उर्मिला माताजी, कल्पना, कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु,
हरे कृष्णा जय हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे